अभी आ रही है क्या आवाज? हेलो 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 हेलो। अभी आवाज आ रही है क्या? बताना जरा। एसपी भाई जी, मेरी जान हिमांशु भाई, बताना जरा आवाज आ रही है क्या? यस यस यस। भाई ये यूट्यूब के कुछ सस्ते नशे हैं भाई, मैं कुछ बोल नहीं सकता अब इसमें। सभी का स्वागत है भाई, आप सभी का मेरी स्ट्रीम पे सभी का स्वागत है। काय बहुत दिनों बाद आ रहे हैं यार, क्या बात है? काय हिमांशु भाई? माइक लगाओ ना भाई। आवाज नहीं आ रही क्या? यस यस यस। लेट मी चेक। मुझे पहचाना? नहीं भाई, नहीं पहचाना यार मैंने। माइक नया लिए हो? स्क्रीन ऑन कर। अरे भाई मैं क्या बताऊं यार, यूट्यूब पे ही बैठा हूँ, यूट्यूब से जाऊंगा आवाज चली जाएगी मेरी। विवास भाई याद नहीं आ रहा यार, पहचाना पहचान से तो लग रहा है भाई, पहचान नहीं पा रहा मैं पर। हेलो हेलो हेलो। नया माइक लिए? अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक, पहचान गया पहचान गया। ओके। एसपी भाई जी भाई, बहुत दिनों बाद आया भाई स्ट्रीम पे। बकवास करके आईडी है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। स्क्रीन ऑन तो कर दूंगा मैं, पर दिक्कत वही है ना, मैं यूट्यूब। मादरा उचिया, ओके। मादरा उचिया, वेलकम टू स्ट्रीम। क्या हाल चाल है मेरी जान मादरा भाई? अरे मैं ये बोला था, मैं भी यूट्यूब अगर मैं बिलीव कर दूंगा ना तो मेरी आवाज़ चली जाएगी, बताना ज़रा। गई क्या आवाज़ मेरी? नहीं, नहीं गई। चेक करने दो ज़रा। नहीं गई। ओके ठीक है। अब यूट्यूब से अपन जाते हैं इस पे, जंक्शन पे जाते हैं अभी अपन। जंक्शन पे देखते हैं अभी आ रही है क्या। जंक्शन पे बस ना जाए। जंक्शन पे चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। बैकग्राउंड में वाईटी को खोल के रखो, आ रही है। हाँ तो फिर जब आ रही है तो फिर वाईटी क्यों खोलना। जब बैकग्राउंड में आ रही है तो मतलब कि जब आवाज़ आ रही है तो उसको बैकग्राउंड में खोलने का मतलब ही क्या है फिर। हम्म, कहीं दिलों में यादों की एक सूली गड़ जाती है। मेरा आईडी देखो अभी ब्रो। ओके, चेक करते हैं भाई। कहाँ गए भाई अपने? कहीं दिलों में यादों की काजुआ 40 लेवल कर लिए। ओके। 187 है भाई। 78 आर्टिफैक्ट्स क्या दे रखे? ओके, एनर्जी रिचार्ज वाली सॉर्ड दे रखी है भाई ने। कहीं दिलों में यादों की 2 पीस सेट, क्रिट रेट 12+। ओके, नाइस। Lonely, I'm still lonely. I have nobody for my own. हेलो सब्सक्राइब भाई, वेलकम टू सब्सक्राइब गेमिंग, वेलकम टू माय स्ट्रीम। क्या हाल चाल है मेरी जान? काजुआ और 45 बिल्ड करूँगा। डैगोस को देखो।
ओके 60 कर लिए इसको, 60 नाइस। अच्छा है भाई 60 कर लिए इसका। अच्छा ये बात है, उसका देख रहा है, वुल्फ का दे रखा है ना। सही है सही है। इसका क्या चल रहा है? 52 एलिमेंट्री, 19, 106, 125। हाँ ठीक है, अभी अभी के हिसाब से ठीक ठाक है। तुझे भूलना तो चाहा, लेकिन भुला न पाए इतना। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक है क्या? नहीं नहीं भाई मेरे पास नहीं है। मेरे पास काजुआ दिया है, 5 स्टार में यही दो है मेरे पास अभी तो फिलहाल। कहीं दिलों में यादों की एक सूली गड़ जाती है। वाह भाई टूटा हुआ आशिक। नहीं भाई, आशिक होते भाई जब कोई बनती तब तो। है ही नहीं भाई। वेले वेले कर रहे बदमाशियां, बोले अंकल आंटियां, अपनी ऐसी यारियां दुनिया पे लुटियां। काजुआ को सपोर्ट रखो भाई, डीबीएस नहीं। नहीं मैंने काजुआ को डीबीएस नहीं रख रखा है, मैंने डीपीएस उसको रख रखा है। क्या नाम है उसका? दिया को रख रखा है अभी तो मैंने डीपीएस पे। आपका कैरेक्टर दिखाओ। ओके मेरे कैरेक्टर्स देखोगे, ये है मेरे पास। दिया को मैंने डीपीएस रख रखा है, और काजुआ सपोर्ट के लिए रख रखा है मैंने। काजुआ बर्फ अच्छा देता है ना इसलिए। दिया प्रायो की है। हाँ हाँ बेनेट तो अपना है ही भाई। बेनेट सबसे बढ़िया है भाई। मतलब कि हीलिंग और डैमेज जब वो बढ़ाता है ना डीपीएस का, एक नंबर तरफ आई। अभी तो फिलहाल मैं ये 4 यूज कर रहा हूँ, बेनेट, कैंसिलिना और ये काजुआ, दिया। लास्ट चैट कोई फ्रेंड के पास अच्छा बिल्ड अक्रोनिक का। रुको, एक भाई है जहाँ तक उसके पास है। सन ऑफ गॉड के पास है क्या भाई? जहाँ तक भाई के पास नहीं है। तो रानी न्यूलेट है भाई के पास। देख के बता सकते हैं भाई, अभी तो फिलहाल इनके पास है क्या? नहीं इनके पास भी नहीं है। हिमांशु भाई के पास है क्या? हाँ भाई हिमांशु भाई के पास है। ये रहा। इनका सही बिल्ड है, मतलब कि आप इससे काम चला सकते हो। इनको न्यूलेट कैसे मिलता है? अरे भाई किस्मत होती है भाई, बहुत पुल करना पड़ता है। अभी थोड़े दिन पहले ही तो आया था, तुम्हारा भाई कर ही नहीं पाया क्योंकि मैं उस टाइम पे गेम खेल ही नहीं रहा था। इनका देखो 83% क्रिट रेट है, और 205 इनका डैमेज है, और प्राय 46 है। माय फ्रेंड ओके बिग फैन। चैट वो हो रही है क्या? अरे रिवर्स हो रही है। मुझे तो पता है न्यूलेट कब आया। न्यूलेट जल्दी रिन्यू होगा। ओके इसका है भाई, इसके पास, इनके पास है भाई के पास। हाँ इनके पास 2 पीस और 4 पीस दोनों है। 4 पीस से 2 पीस सेट भी है, 4 पीस सेट भी है। अगर चाहो तो भाई इनके आर्टिफैक्ट्स से तुम काम चला सकते हो अगर तुमको करना हो बिल्ड तो। भाई ने अच्छे बिल्ड कर रखे हैं। भाई ने एचपी भी बना रखा है, और एचपी और रेट रेट पे बनाना ज़्यादा इजी होता है। ये सही है, मतलब कि इजी टू बिल्ड है ये। नहीं पता आई मीन ओके। मतलब इजी टू बिल्ड कह सकते हो। मैं मेरे को भी अपने बैनेट लेवल बढ़ाना है भाई। अपने बिज्जू भाई के पास नहीं है। नहीं 70 का काजू है इनका, मेरे को भी काजू बढ़ाना है। रोमे बिल्ड
कब से इजी हुआ भाई? देखो अगर करना चाहोगे तो तुम्हारे लिए भाई टफ, देखो टफ पता है कब पड़ता है, जब तुम्हें आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलते और उसका वेपन, वो जो उसकी जो मेन वेपन जब यूज़ करता है ना, उससे तुम्हारा वो कर जाता है। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होता है, क्योंकि देखो भाई मैं हूँ न्यू प्लेयर, मेरे को जितना मालूम है मैं उतना बता रहा हूँ, बाकी तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, फिर इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता फिर। आर्टिफैक्ट्स का फिर तो इसके में नहीं मिलता, आर्टिफैक्ट तो सच में नहीं मिलता, वही तो बात है ना भाई। कैरेक्टर भाई है, मतलब कि वो सब, मतलब कि आप लेवल अप कर सकते हो, पर मेन चीज़ वेपन और उस पर अटक जाती है आर्टिफैक्ट्स पे। वेपन तो चलो भाई पूल करके मिल भी जाता है, पर भाई उस पर अटक जाती है कहानी। कहीं दिलों में यादों की एक सूली गड़ जाती है। Whoa, this place is packed already. Of course. No one's gonna miss out on the chance to welcome our hero. मुलानी अभी किसने बिल्ड किया है यार निकाल के? She's never had this many eyes on her before. क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना, ओ दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला। लट के लिए मुलानी नहीं लिया। Yeah, it's all taken care of. Our new friend here's got some tricks up his sleeve, by the way. He's just as strong as Kachina made him out to be. कोई लिया मुलानी नहीं लिया, ओके। न्यूलेट ज़्यादा बढ़िया है यार वैसे तो, मुलानी से ज़्यादा बढ़िया है। न्यूलेट का मेरे को वो जो बस स्प्रे मारता है ना वो हाइड्रो में, वो मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। पर वैसे अगर हाइड्रो में अगर आप वैसे देखोगे ना तो यालान ज़्यादा बढ़िया है। यालान डैमेज में और क्या बोलते हैं उस पर, HP और EM पे बेस्ड रहती है ना, ऐसा कुछ समथिंग, जैसा सीन आप समझ सकते हो। Warriors of Natland, heed the call of नटलैंड life. मुलानी हाई डैमेज देती है लेकिन कॉन्स्टेंट नहीं है मुलानी। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, मेन दिक्कत उसी का है ना। अगर आपका कॉन्स्टलेशन जगह बड़ी मुलानी पे ना, अगर आप कॉन्स्टेंस 1 या 2 लेके चलोगे ना तो सही रहेगा। C1 या C2 की रहेगी मुलानी तो और अच्छा बस्ट मार पाएगी। पर भाई अगर उसको न्यूलेट को देखो भाई, अगर न्यूलेट आपका अगर 3 या 4 का है तो भाई वो भी बहुत अच्छा मार सकता है भाई बस्ट। मेन सारा खेल तो डैमेज का ही है ना यार, चाहे मुलानी दे चाहे न्यूलेट दे, बस फर्क ये पड़ता है कि आप टीम कैसी बिल्ड करते हो और कौन सी टीम आप यूज करते हो। बाकी टीम में तो एक खेलर होनी ही चाहिए भाई। मेरे पास तो एक भी नहीं है, मेरे पास बारबरा है। मेरे पास तो बारबरा बस है। कहीं दिलों में यादों की एक सूली गड़ जाती है। माना अपना इश्क अधूरा, दिल न उस पे शर्मिंदा है, पूरा होके खत्म हुआ सब, जो है आधा वो ही जिंदा है। तुझसे मेरा दीन धर्म है, तुझसे मेरी जुदाई, तू बोले तो बन जाऊं मैं बोले शाश्वत। गाइस अभी भाई स्ट्रीम को लाइक कर दो भाई, जितने भी लोग नए देख रहे हो भाई, हो सके तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, जहाँ तक ये नेक्स्ट बैनर पे आने वाली है, नेक्स्ट बैनर भी बढ़िया आ रहा है, मतलब कि इतना कुछ खास भी नहीं है, पर ये वो उसमें एक कैरेक्टर है। What? What does that even mean? प्रीमो मिलता है, मिलता है ना भाई, प्रीमो मिलेगा ना। सबसे हार्ड तो वही रहता है यार साला, मतलब कि 100 150 200 दिन लगा के साला कलेक्ट करो, और जब अच्छे बैनर नहीं है, कोई अच्छा बैनर आता है तो मिलता ही नहीं है। मेरा काजू 80 ब्रिटी पे निकला है भाई, सबका भाई 50 पे निकल जा रहा, बट रेड एफ हो चुकी है। Since the Archon couldn't find Kachina in the Night Kingdom, that must mean there's more to this. enough हो चुकी है, ओके।
नेक्स्ट बैनर वैसे मतलब कि कुछ लोग के लिए अच्छा भी हो सकता है भाई, जिनको वो कैरेक्टर पसंद है, और कुछ के लिए नहीं भी हो सकता है। Your wild guesses are Maybe you did. नेक्स्ट बैनर पे वो एक कैरेक्टर आ रहा है जो अच्छा बस्ट मार दिए बेनेट, मतलब कि उसका और बेनेट का मतलब कि समझ लो ना, थोड़ा बहुत ही मतलब कि जैसा बेनेट रोल करता है ना वैसे वो भी करती है। च्यूबेस ऐसे कुछ नाम उसका कैरेक्टर का है, And if she was on वो बढ़िया है, चाहो तो निकाल सकते हो। How dare you? And Kachina sacrificed herself to repel the abyss. She doesn't deserve to be subjected to your vile rumors when she's not even here to defend herself. यादों की Calm down, Mulani. There's no point arguing with the likes of that. I can't just sit here and let them slander her like that. to insult a hero of Natland. You. मुल्लानी। Think about it, everyone. Who do you think is मेरे को तो really काजू का बस निकालना था, मैं तो काजू का बस निकाल लिया। मैं बोला बाकी कैरेक्टर भाड़ में जाए भाई, क्या करेंगे उसको निकाल के। or the great Pyro Archon? Why would the rules of our nation suddenly stop working? That's true. If she wasn't revived, it must mean she failed to achieve victory. C6 में बढ़िया है शिवरेश। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, काजुआ तो म्यूट्स कैरेक्टर। I mean, that girl didn't look all that strong to me. काजुआ बफ के लिए जाना जाता है ना, काजुआ आपको सपोर्ट देता है, समझ रहे हो? बात वही है ना यार, काजुआ का आप सपोर्ट में लेके चलोगे तो ज़्यादा बढ़िया चलेगा। डीबीएस में वो अच्छा रोल नहीं प्ले करता, और सब डीबीएस में तो तुम भूल ही जाओ। Waiting for this moment, no matter how daunting the situation, no matter how scared she might feel, she's always the first person to. We don't even know what happened, so don't you dare try to use this. नेक्स्ट बैनर जो आ रहा है उसमें मैं नाहिदा निकालूंगा भाई। डेंड्रो में जो सबसे बढ़िया कैरेक्टर है ना भाई, जो अच्छा देती है डैमेज और टीम को भी सपोर्ट देती है भाई, वो नाहिदा है भाई। कुछ भी कहो, डीबीएस को भाई हेल्प भी करती है और एचपी भी बढ़ाती है, डैमेज तो इंक्रीज होता ही है। If there are things you wish to, No, even though I have, नाहिदा अगर C2 या C3 की होगी तो और ज्यादा बढ़िया रहता है, पर वही है भाई, एक ही बार निकाल ले वही बहुत बड़ी बात है, तो 2-3 बार निकाल ही लेंगे फिर तो। My friend Kachina. Do you have any नाहिदा idea where she is? It's extremely लेना होगा important मुझे to भी। me. हाँ हाँ नाहिदा, डेंड्रो में सबसे बढ़िया तो वही तो है ना नाहिदा। I've already shared everything. और कौन सा है भाई? If you want to learn the truth and rescue your friends sooner, you should join the investigation. ओए मिली तो मेरे को वैसे ही वो पसंद नहीं है भाई। Of course I'll डेंड्रो join. मेरे को ना वो मतलब कि नाहिदा क्या है ना, मतलब In that कि case, come सेक्सी see भी me in the दिखती है यार, speaker's क्यूट है, chamber. बढ़िया छोटी सी, We should join them. बढ़िया दिखती है भाई कुछ भी को। Oh, वो कैरेक्टर मेरे को अच्छा भी it's लगता है। not. Rest assured, once again, I believe she did. भाई साइड सीन्स खत्म ही नहीं हो रहे भाई इनके। क्वेस्ट में यही तो दिक्कत होती है यार, साला इतना साइड सीन दिखाते हैं ना स्टोरी के। वैसे आप कैरेक्टर रिव्यू करते हो? हाँ भाई कर देते हैं भाई। The situation is urgent, so I'll get straight to भाई the मेरे को point. जो समझ में आता है मैं वो कर देता हूँ भाई। मैं ये नहीं बोलता कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो सच ही होगा या वो 100% सही है। That's correct. How long will that take? It's hard to. Kachina, oh, she wasn't afraid of death because she knew. Kachina. Whenever we sat down together, exhausted from training. अभी जियो में तो एक और नया कैरेक्टर आने वाला है ना नेक्स्ट बैनर पे। मैं जहाँ तक अगर मिलेगी तो निकाल लूंगा, नहीं मिलेगी तो फिर कोई बात ही नहीं है भाई। पर मेन मोटिव मेरा वही रहेगा, नाहिदा को निकालना। मेन तो मेरे को नाहिदा ही निकालनी है। What are we supposed to do now? Sit peacefully and wait for her return? Lose ourselves in grief over her death? Tell me, are we her friends or her murderers? Send off with her. That's not fair, Mulani. It's all right. ये ढूंढ रहा हूँ। I ओके understand your rage and your grief. ठीक है। Believe me, but please, hear what I have to say so I can at least give you a broader picture of the issue we are now facing. Considering the recent attack on your tribe, I believe the Abyss has found a new means of undermining the rules of our nation. कहीं दिलों में यादों की एक सूली गड़ जाती। हाँ भाई करता हूँ अभी 2 मिनट। But if we stop अभी altogether, वाला क्वेस्ट हो जाए पहले तो। the sacred flame will only grow weaker. The Abyss will scale up their attacks, and the tragedy we saw with the people of the Springs will only be the first of many. If we compare the two choices, the former seems to be the quest lesser का of two time. evils.
Sorry, I know that may sound harsh, but I bear the name Malipo. नींद आते ही आता है। हाँ भाई मेरे को खुद को नींद आ रहा है यार, अबे खुद को नींद आ रहा है। Understand it if we want to approach this rationally. But what would you say, Mualani? This is personal for you. एक तो ये लोग इतना बात करते हैं भाई, इतनी बातचीत तो भाई मैंने होल लाइफ में कभी नहीं की होगी जिंदगी में। I can't choose between. भाई इनकी बातें खत्म होती ही नहीं है यार, पता नहीं ऐसी कैसी बातें करते हैं यार ये लोग। And that is the crux of the problem. Either way, there will be, once doubt has crept, their ultimate to prevent what happened to Kachina from happening to anyone else. We need to suspend the pilgrimage. हाँ भाई मान गए भाई, उसने मोनाली को मार दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई वो इतनी पावरफुल है। मानते हैं पावरफुल है, पर भाई अगर C6 हो तो ज्यादा बड़ी है भाई, अगर तुम कचीना यूज कर रहे हो तो भाई, क्योंकि वो तो एक जियो कैरेक्टर है। This won't be easy. I'll need time to figure out the best approach. I understand your anger, Mualani, but I hope that provided some clarity at least. बात करते हैं। Wow. ओके भाई तो बोल रहा हूँ ना, उनकी बातें खत्म नहीं होती भाई, पता नहीं। और एक तो भाई बातें में भाई सेंस भी नहीं होता कि भाई बातें क्या कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी कहीं से भी उड़ता वो करेक्टर आएगा। अरे हाँ यार मैं मिला था तुमको, याद हो गया मैं तुमको, अरे ऐसा। अरे भाई नहीं याद है भाई, देखो मिले ही नहीं आज तक कभी, तू कहाँ से याद रहेगा मेरे को। हाँ ट्रैवलर को सब जानते हैं भाई, पूरे पूरे गेम में भाई कहीं भी चले जाओ, हाय यू आर ट्रैवलर। अरे भाई मेरे को मालूम है मैं ट्रैवल करता हूँ। You've learned about the concept of ley lines during your travels, yes? The Night Kingdom is something similar. Staying there for a short period of time shouldn't have an effect on the person. मतलब इनकी बातों का कोई सेंस है ही नहीं भाई। In the picture, it's a different story. शॉर्ट पीरियड, अरे भाई शॉर्ट पीरियड टाइम भाई हमें क्या लेना देना भाई तुम्हारे पीरियड टाइम। Eventually you become one with the sea of souls. Imagine pouring a cup of water into a rushing river. You can try to scoop up another cup. But there's no chance it will be the same water you had before. Another cup to river, river to cup, पर another cup। अरे भाई that is the danger Kachina वहाँ का भरोसा कर देते हैं भाई पूरे दिमाग का। Just like you said, Archon, both of these problems need to be addressed. You can focus all your efforts on dealing with the sacred flame. I will go search for Kachina. बोलेगी तेरी बहन कौन है भाई बता। It is very possible you will not return. Knowing that, do you still choose to go? Kachina's waiting for us to rescue her. हाँ ये मतलब कि इसकी बहन रहती है ना, ढूंढता रहता है। मतलब कि गेम स्टार्ट होने से पहले आपके पास दो ऑप्शन देते हैं, तो आप इसकी बहन को ले लो, बहन अपने भाई को ढूंढेगी, या तो भाई को ले लो तो बहन उसको, मतलब भाई बहन को ढूंढेगा। ये सही है भाई, समझ रहे हो, ये सही है। मतलब कि गेम वालों का ये कहना है कि भाई चित्त भी हमारा पट भी हमारा, उनका कहने का मतलब भाई सांप भी हमारा लाठी भी हमारी, टूटेगा भी नहीं कुछ। If we can find Kachina's ancient name, I can use the link between them to pinpoint her position within the Night Kingdom. Then comes the hard part. You need to visit the Night Kingdom in person and rescue her. But isn't the Night Kingdom a land of souls? Can we even go there? Under normal circumstances, only the consciousness can enter. But there is a way to go there in person. सिर्फ जोलिंग ये है जो इसमें कुछ नहीं वो बोल सकता। अरे भाई वो सही भी लगते हैं भाई, पता है मेरे को, अगर भाई अगर मेरे को कोई कैरेक्टर सही लगते हैं तो वो जोलेंगे भाई, भाई एकदम भाई चौड़ में खड़ा रहता है हाथ फोल्ड करके। अरे भाई बाहर में जाए हमें क्या, हमारी तरफ से बाहर की भट्टी में जाओ भाई तुम। वो उसके पास खुद आते हैं भाई बातचीत करने की, और भाई कैसा है भाई हाल चाल, पानी यानी पिए, चाय पिएगा, उसके पास खुद आते हैं भाई, वो किसी के पास नहीं जाता। बढ़िया भाई हाथ फोल्ड करके खड़ा रहेगा, बाहर में जाए, हमसे बात करोगे तो करेंगे, नहीं करोगे तो नहीं करेंगे, सीधी बात है भाई। तुमसे अगर बातें ही करनी होती तो मेरे भाई तुम्हारे पास ही आती ना भाई। यहाँ भाई चूतिया से लोगों को ट्रेनिंग क्यों देते हैं? अरे भैया आर्टिफैक्ट्स भैया मालूम बहुत मुश्किल। अरे थैंक यू तेरे आर्म्स भाई, मैं क्या बोलूँ अब। अरे भैया मालूम है भैया मैं ही ट्रैवलर हूँ, कोई दिक्कत है तो बताओ। ट्रैवलर बस तो बोलते हो, नाम ऐसे Hnxdevil रखा है, कभी जिंदगी में मेरा नाम भी लिया है, ट्रैवलर ही हूँ बस मैं। वही तो। Why?
Is that not what happened in the other nations? अबे ये भाई ये और भाई इसे देख के तो मेरे को और गुस्सा आता है भाई। बात खत्म होने वाली होती है अपने पेमन बोलेगी अरे ऐसी इतना जल्दी थोड़ी हो जाता है, इतना जल्दी थोड़ी। अरे तू भाई थोड़ा सा पागल आगल है क्या भाई? भाई अच्छी खासी देखो बात खत्म होती है। अरे वाई, अरे भाई वाई 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 क्यों भाई? वाई वाई न्यूडल थोड़ी बना के खा रहे भाई यहाँ पे लोग। अबे अंटसेंट भाई। Atea was wounded. It embodies fond memories and my strength of will. कभी कभी तो लगता है मेरे भाई लोग कोलगेट वोलेट की नहीं करते होंगे मेरे भाई। इनकी लगता है माओ ने कभी दिया ही नहीं भाई इनको कि हाँ अपने लड़के को खाली कोलगेट ही देते हैं और कुछ तो देते ही नहीं है। हमारे कोलगेट में नमक है, वो भी सीधा नमक है भाई। पेम उनको बचाना होगा। अरे भाई मैं तो बोलूंगा भाई भाड़ में तो जाइए, मेरी तरफ से भाड़ की भट्टी में जाए भाई, मेरा क्या जा रहा। भाई मैं अपनी बहन को बचाऊंगा भाई जो मेरे को राखी बांधेगी। ये कौन सा मेरी बहन है भाई? वो तो बस भाई एक मेरे मन के अंदर का भरम है। अब तुम ये मेरे को बताओ ग्रेविटी कहाँ है भाई? वो हवा में क्यों उड़ रही है भाई? ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती ना, सब खड़े हैं भाई अपने पैरों पे, ये भी छोटी सी अपने पैरों पे खड़ी है भाई। वो हवा में कैसे उड़ सकता है कोई? ये भाई ये सेंस बनता है भाई। बचाना मतलब सेल। अच्छा भाई इसको बेच देना। अरे बिल्कुल भाई सही। अच्छा वो भाई बेच दिए थे भाई इसको, तो नहीं तो मैं तो खुद ही बेच के ना इसको 2-3 मिलियन मोरा मांग लेता भाई। बेच तो दो भाई, कौन सा मेरे काम आ रही है वो, साला मुश्किल अलग बढ़ाती है वो। भाई पायरो एनर्जी ने चौथी बार मेरे को बताया कि पायरो एनर्जी होती क्या है। नहीं तो मैं तो जिंदगी में भाई अभी 2 महीने से गेम खेल रहा हूँ, मेरे को यही नहीं मालूम कि भाई पायरो आखिर होता क्या है, क्या होता है पायरो। अच्छा कचीना डिसअपीयर भी हो गई भाई, अभी तो आई है, डिसअपीयर भी हो गई। No. If the public learned that Natlan's destruction was close at hand, there would be immense panic. Okay. But if I said nothing at all, they would have continued to question the integrity of Natlan's heroes. अच्छा Another simple choice. भाई ये भाई इसका नाम नातालैंड है, इसका नल्ला लैंड भाई, नल्ला लैंड होना चाहिए नाम भाई। मैं बता रहा सीधी बात, यहाँ पे सबरे के सबरे नल्ले भाई। ये क्या भाई, क्या बातचीत कर रहे भाई? सर के ऊपर से जा रहा भाई। ये जो छपरी है इस लड़की की, जो बाल है ना मावी का के भाई, अगर वैसे बाल में रखता ना मेरा बाप मेरे को कब का घर से भगा दिया होता। मैं 100% 100% लिख के दे सकता हूँ। ये भाई तू भालू की शक्ल में भेड़िया है मेरे भाई, अब उसके बाल सफेद हैं, अगर ये काला है तो भाई ये कहाँ से लग रहा है कि ये इंसान है भाई? अरे भाई भटे जैसी शक्ल बना देते हैं, कसम से बता रहा हूँ। इनसे भाई तुमसे बढ़िया तो मेरे भाई गली का कुत्ता दिखता है, कसम दिखता तो है कि भाई कुत्ता है वो। रुकर भाई की आईडी रिव्यू करनी थी, कहाँ गई भाई की आईडी? वो लड़की है भाई, लड़की है तो छपरी है क्या मेरे भाई? साला गेम में भी छपरी पना नहीं छोड़ रहे भाई लोग, कसम से बता रहा हूँ, गेम में तक छपरी पना नहीं छोड़ रहे। अरे बताओ भाई लड़कियां भी छपरी होने लगी भाई। भाई क्या जमाना आ गया भाई। अभी तक मैं सोचता था भाई कमजोर लेग पीस होता है, अब तो भाई पूरा का पूरा ही लेग पीस है भाई ये तो। But that can only last so long. I think we should focus on the remaining ancient name bearers. कसम से भाई कभी ये लोग ना इंडिया नहीं आया, नहीं तो मैं इनको ना पोलियो पिला के मार देता हूँ, कसम से बता रहा हूँ। 2 बूंद पोलियो के नहीं भाई 10 बूंद पोलियो के पिलाता, बोलता भाई तुम जाओ भाई, तुम्हें पोलियो की बीमारी हो गई है। It is for them to decide how. All we can do is support them. Even so, for you to make this sacrifice, it's not right. अबे एक काला सांड का बच्चा और बोलने लगा। No other is capable of sustaining the sacred flame. सीक्रेट फ्लेम। हमारे यहाँ तो माचिस में आग जलती नहीं है, गैस में आग जलती नहीं है, क्या सीक्रेट फ्लेम जलती है भाई, सीक्रेट फ्लेम। वाह रे वाह, चाइना कोई चीज में भाई हर चीज में आगे भाई चाइना। क्या हो गया अब सांड के बच्चे? अबे इनको तो 10 बार मैंने मारा है भाई, इस हथौड़े वाले को। साला ऐसे ही भाई उठा के फेंक देता हूँ मैं तो। अबे नल्ला लैंड है मेरे भाई, ये नल्ला लैंड है, नाता लैंड नहीं है भाई ये। अरे यार इनको वेपन दो ना, इनको वेपन दो, पावर दिखाने का मौका तो मिलना चाहिए। अरे अरे बाप रे बाप,
क्या क्लाइमैक्स है? उसका नाम मैंने लसन पढ़ा था, फिर देखा नेम अंसारी है, कैप्टिनो है ये। अरे मेरी तरफ से मेरे भाई कुछ भी हो भाई, मेरे को क्या लेना देना उससे। ये अरे बाप रे बाप भाई, फिर बच्चा बताओ भाई, मैं एग्जाम देने गया, हम एग्जाम में मैं चश्मा लगा के लिखूंगा तो मेरे को दिखेगा क्या, वो भी लाल कलर का? अरे भाई यही, अब बताओ भाई, सामने मेरे सामने भाई छोटा सांड लड़ रहा है भाई, और मैं लाल कलर का चश्मा लगा लूं, सांड भी लाल दिख रहा है, क्या दिखेगा भाई तुम्हें? और फाइट करते समय चश्मा कौन लगाता है? ये तो बॉलीवुड का ही सीन हो गया मेरे भाई, बॉलीवुड में कुछ भी होता है। I assume that's the end of your speech. स्टाइल तो ऐसे मार रही है जैसे बहुत बड़ा। अरे कैपेचिनो है ये, अच्छा इंडियन कॉफी हाउस में जो मिलती है ना सीसीडी में। ये लो भाई, भाई चश्मा जल गया भाई उसकी, भाई हॉटनेस इतनी ज्यादा थी कि उसका चश्मा ही जल गया मेरे भाई, बताओ। भाई ये रावण का गाना किसने लगा दिया भाई बैकग्राउंड में? आवाज आ रही है क्या? ना रावण का साउंड आ रहा है, जीवन डुन 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 डुन। अरे भाई ये ट्रेन थोड़ी चल रही है मेरे भाई, फाइट सीन है भाई, सही में नल्ला लैंड है भाई, ये नल्ला लैंड। अरे सांड के बच्चे भाग गए भाई, सांड के बच्चे भाग गए। सही है भाई, सही है भाई, जिंदगी में पहली बार भाई कहीं पे महिला जीत गई भाई। नहीं तो अभी तक तो मैंने देखा है भाई कि यहाँ लड़का एक हाथ मार दे तो लड़की उठ के भाग जाती है। अरे जिंदा है अभी तो। भाई इनकी फाइट सीन में फाइट कम हुई, धुआं ज्यादा निकल रहा है भाई। मारा तो कुछ नहीं है भाई, एक दीवार तक नहीं टूटी है। ये कहाँ से आ गए भाई इतने सारे मीटी, और लैंड स्लाइड भी हो गया भाई, बताओ पता ही नहीं चला। Are you all right, Archon? He was a formidable opponent. Exactly what I would expect from the first of the Fatui Harbingers. I never imagined someone could match you in combat. If the Tsaritsa sent him here, why would he bring up what happened 5 centuries ago? Yeah. And how much does he know about Natlan? The Harbingers are all driven by Nalla land hai bhai, Nalla land. The only purpose that unites them is collecting the mercies. But I'm sure the captain has his own reasons एक और for कट being here सीन as well. होगा बाद में। अरे भाई क्या मालूम, इनका सीन ही खत्म नहीं हो रहा भाई। इनका सीन नहीं चेंज हो रहा, और यहाँ कुछ लोग का कमबैक ही नहीं हो रहा भाई, मैं क्या बोलूं। The wound I inflicted should hold him back and weaken him for the time being. Besides, सबर रखो I'm तुम। sure you noticed. ओके The power that came to ठीक है his भाई, rescue just सबर now का फल came भाई from the हमेशा मीठा monsters होता है, of कहीं Nightwind. खट्टा न मिल जाए। In other words, there are traitors among us. Not necessarily. This could prove to be a very valuable turn of events. When we exchanged final blows, I sensed an unusual presence within him. I'll need to investigate further. Kanich, go to the Masters of the Nightwind and look into who could have aided the captain. Speak to Seat Lali. She should know. Of course, I'll head out right now.
Do you still intend to... Yes, but fear not. Natlan's strength has never rested solely in its Archon. Together we foresaw the only path that leads to our nation's future. We must trust in that vision now. Is everything okay, Archon? Completely fine. Just lamenting the fact that I never got a picture when I could still turn my hair into flames. Too late now. I just hope the others have a safe journey. What's happening at the stadium? Did something explode? It feels like the Archon unleashed her power. She must be fighting a formidable opponent. Should we go back and check what's going on? Have faith in the Archon. She wouldn't lose in a one-on-one confrontation. Once we find Kachina's ancient name, we'll head right back. Okay, let's just keep climbing. Everyone really hopes nothing goes wrong. ओके फाइनली क्वेस्ट खत्म हो गया। भाई की आईडी विजिट करनी थी अपन को। भाई बोले आईडी का रिव्यू कर दो। भाई की आईडी कहाँ गई भाई? ये रही भाई की आईडी। भाई की आईडी है अपनी, क्या है आईडी? 893 19 199 336। भाई की आईडी का नाम है जित्सु। भाई के पास है क्रॉनिक, जो भी इसका नाम हो। लेट मी चेक। EM 82 है। ओके, कट रेट है 97 का। CRT डैमेज है 184। ठीक है। एनर्जी रिचार्ज 100। बायो डैमेज 46। बाई टेंसर। ओके 33 यहाँ से मिल जाएगा। 23 और पैक वाले ही इस्तेमाल कर रखे हैं। सही है भाई, बढ़िया बिल्ड है भाई, अच्छा है। 2 पीस और 4 पीस दोनों मिल रखा है, सही है, बढ़िया है भाई। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से, सिनेमा हॉल से फेविकॉल से मेरे फोटो को। ओके भाई बढ़िया तुम्हारा। अब कहाँ जाना है अपन को? पार्टी हो रही, बहुत भयंकर पार्टी की, एक गजब नजारे। दिक्कत है बस एक बात की, गांव में आके ताऊ कुमारे निकरवाड़ी छोड़ी नहीं हो, वो तक चढ़ा रखी है। एक खत्म न हो रही उससे दूसरी मंगवा रखी है। नाचे देख ली कैसे आग सी लगा रखी है, इतनी सी तू है नहीं है, आप मचा रखी है। पार्टी पूरी रात, नाचू पूरी रात, खाना खाऊं आधी रात, पार्टी ऑल नाइट।
वीरू पारी और नाइट। चलो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम घर को जा लो। देख भाई चुपचाप मेरा क्लेमिंग रिवॉर्ड दे दे, बकचोदी मत कर पी के। फटाफट ला पैसा ला, माल पानी ला। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम शोर मचा लो। बेनेट यहाँ पे अपन ने लीसा को लगा दिया, लीस में होगा। एक यहाँ लगा देते हैं अपन नंबर को। ओके यहाँ लगा दो एक को, रोजेस को लगा दें यहाँ पे। रोजेस आर वाइट, जिंदगी आर ब्लू। निजाम में क्या कद्दू मिल रहा भाई। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, दुनिया यूं चलेगी। ओके मैंने 5 लीटर लगा दिए हैं। हम लोग चेंजलिंग को करना है भाई। सबसे पहले चेंजलिंग को अपन मैक्स करेंगे, उसके बाद अपन, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसको 70 का कर ही देता हूँ, उसके बाद बाकी फिर अपन काजुआ को बिल्ड तो करिए। चेंजलिंग, द सीनरी ऑफ माय हार्ट। जाने मेरी मैं तेरा हाँ, हाँ जी तेरा तू कर ले यकीन, मैनू प्यार है बस तेरे नाल। उसमें अपन को 1000 XP मिलेगी। ओके लेट्स गो, 1000 XP मिलेगी दोस्तों। ओके हम लोग आ चुके हैं। टेलीपोर्टेशन, टेलीपोर्टेशन, टेलीपोर्टेशन जुत्सु, फ्लाइंग राइजिंग के साथ। That's Waina, the tribal chief. Let's head over to him. Chaska. Nice to see you again, Waina. I'm afraid we don't have time for pleasantries, so I'll get right to it. We're here for the Spirit Speaker Stone. Whoa, hold on a second. At least tell me why you need it first. My friend Kachina is trapped within the Night Kingdom. We need the stone to find her ancient name and rescue her. Rescue her? From the Night Kingdom? That's right. I'm sorry, but someone needs to tell you what you don't want to hear. Going there, a mature warrior would never make such a foolish decision. The nature of battle is unpredictable. You never know how it's going to end. Losing a friend is tragic, but when that happens, the best thing you can do is focus on how to prevent further casualties. I appreciate what you're trying to say, Chief Waina. But if the price of maturity is abandoning a friend in need, I'll choose foolishness any day. If Kachina's still holding on, then so will I. I thought you might say that. Is something wrong, Waina? This doesn't seem like you. Life isn't complete without taking risks. That's always been your mantra. It's nothing. The Night Kingdom is a dangerous place. Can't blame me for checking if you were up to the task. If you're that determined, far be it from me to stop you. Here's the stone. Keep it safe, okay? It's not like we have a spare. Thank you. Huh. Seems like you two go way back.
But aren't you from the Flower Feather clan, Chaska? Oh, Chaska's a peacekeeper, so she's famous throughout the tribes. She's always the one people call to resolve conflicts, so we slowly got to know each other that way. Her younger sister Quichi's always hanging around our tribe, too. She's helped us out a lot in the past. Oh, you have a younger sister? Yes, I'll introduce you to her sometime. But let's get back to business. Wayna, how do we use the stone? As you probably know, your intended destination is completely different from the real world. The Night Kingdom is like a river flowing with concepts, and the ancient name you seek is like a tiny fish swimming downstream. हेलो और भाई कैसे हो मेरी जान, वेलकम टू माय स्ट्रीम। सबका स्वागत है, स्वागत है मेरी जान आपका भी। You need a fisherman experienced enough to steer it in the right direction. स्वागत है। We couldn't do that ourselves. With a little practice, I'm sure you could. You have the strength and the talent. If you want to make sure this VC works, on कर लो, I could okay. recommend someone to you. VC on कर लूँगा तो। Vichama, a legendary warrior and scout from our tribe. He's got a keen eye and a well-honed intuition. Even his ancient name means to seek. If you're fishing for a name, you're gonna want him on the boat. Bichama? Why does that name sound familiar? He's one of Auntie Atea's hot spring buddies. VC पे आ गए मेरी जान अपन। Where can we find him? Ever since Malco passed, he spends most of his time gazing out at the scenery from the cliff tops. गेम खेलना है ब्रो, ओके। I'm sure you'll find it. और भाई अपने ऊपर जो वीडियो आया, ऊपर जो मैंने न्यू वीडियो का लिंक दे रखा है, जाके जरूर एक बार लाइक कर देना भाई वीडियो को। अपना सेकंड चैनल का वीडियो है वो, Good luck. सपोर्ट दिखा देना उस चैनल पे भी भाई। ओके, अपन को घंटे यहाँ से कुछ नहीं मिला, अपन को कहीं जाना पड़ेगा। ओके, फिर से इनकी बातचीत चालू होने वाली है। Hello there, are you Vichama? That's me. Did you need something? What? You're saying you can bring someone back from the Night Kingdom? How is that even possible? No. If you really think about it, anything's possible in that kind of place. But that would mean... Are you okay? You don't look so good. Everything's fine. I'll help you, but I do have a small request. After I help you find Kachina's ancient name, I want to use the stone to look for my friends as well. Your friend? Oh, why not mention someone named Malco? Is that who you're talking about? Yes, but I'd rather not get into it if it's all the same to you. That's not a problem. We agree to your request. Yeah. Since you're helping us find Kachina's ancient name, it's only right that we return the favor. Then we're agreed. Can I have a look at the stone? I see. From what I can tell, it functions almost like an abyssal pylon. Both connect the Night Kingdom to the living world. Once the connection is established, the abyss will come surging through the opening like a predator honing in on the scent of blood. So we have to be sure not to use it in a tribal settlement. Wow, you got all that just from looking at it? I just picked up on the basics, really. I still have no idea why it works. You said someone named Sitlali invented this. They must be a genius. I'll go find an open area and start setting things up.
In the meantime, I need you to get 2 things for me. We'll go right away. What do you need? First, I'll need some hook ropes. Pretty much every store around here carries them, so no need to go anywhere special. Oh, and I need to build a net out of them, so make sure you get a good amount. Wait, are you saying you're going to use a real net to catch Kachina's ancient name? How does that work when one's tangible and one's not? By creating something tangible in our world, like a net, we can create a connection to a corresponding concept in the Night Kingdom. Basically, I'm going to use the concept of a net to catch something equally intangible, an ancient name. Oh, I see. What about the second thing you needed? Right. I need 2 chunks of obsidian. Once we bring the ancient names into our world, we'll need a place to store them. Normally, you can only get obsidian from the Children of Echoes, but I heard there's a traveling merchant from that tribe around here somewhere, so maybe you can try your luck there. Gotcha! Alright, let's split up. See that clearing? Let's meet over there when you're done. Oh, and you can send someone with me if you want. In case you're worried I might take the stone for myself. What do you think, Chaska? There's no need. Lena spoke highly of you. That means you're trustworthy. I appreciate it. Even though that... Anyway, it'll take some time to set everything up, so no need to rush. I'll see you in a bit. What an odd guy. He seems so defeated, but also really invested in the stone at the same time. I don't have any more insight than you, Paimon. Let's just focus on the preparations for now. Hang on, Kachina. We're coming for you. Hook ropes? As in rock climbing equipment? Yes. How much for your whole stock? Oh, the whole thing? Let me see. That would be 30... Deal. Wait. What, you want me to Oh, no problem at all. I'll even pass along some information on the house. All right. That's everything. Here you go. Now we need the obsidian. Let's go talk to the traveling merchant Bichama mentioned. Excuse me, do you sell obsidian? Why, yes. I've got a chunk for... Perfect. Is that the only one, though? We actually need 2. That might... Thank you so much. Relax. Everything's going according to plan. I know, it's just... I could tell Vichama feels the same way. Kachina always carries all sorts of shiny stones with her. If I was the one trapped in the Night Kingdom, she'd have a whole pile of obsidian ready in a heartbeat. Well, would you look at that? I did bring an extra. Here you go, young lady. How does it look? Perfect! Thank you. How much do I owe you? If you hadn't shown up, here you go. How's he doing? Do you know what happened between them? I heard about it in passing while I was out drinking one night, but I don't know all the details. Bichama and Malco grew up together, and even made a name for themselves together.
Melko was an amazing fighter, capable of knocking out multiple opponents in a single hit. 5 years ago, they both emerged triumphant in the pilgrimage and were placed on the same team to fight the Abyss. But on the eve of... Then what happened? The team agreed that Vichama didn't... it's just... Melko... Vichama went into a deep... Oh, you're not wrong. But it's possible. I've tried convincing him to move forward. The Abyss has caused... Anyway... Follow the wind. Let's light it up! Let's light it up! I'm going in! Buckle up! Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth.
go! We go! Did you get everything? Yep, it's all here. When do we start? I've made all the necessary adjustments, so we're good to go. As agreed, I'll help you find Kachina's ancient name, and then you return the favor. Go ahead. Yes. After Malko fell, I scoured the battlefield to see what happened. It turned out he wasn't bested by some impossible... If I had been there, I would have been able to sense the danger. I could have warned them not to advance. I've always blamed myself for what happened. But when you told me about Kachina, I realized there's a chance Malko might also be alive, fighting for survival in the Night Kingdom. But that happened several years ago, right? The Pyro Archon said all life within the Night Kingdom eventually becomes one with the Sea of Souls. There might not be much hope, but I still have to try. Malko and I promised each other, even if we never managed to root out the Abyss for good, we would fight together until the end. All right, let's get to it. I'll start searching for the conceptualized version of... Make sure you prepare yourselves for battle. As I said, the stone will link the mortal realm to... Look at that golden thing! It must be one of those fragments Vichama mentioned. Let's get closer! Don't stand too close to me, or you might get hit by lightning too. Adventure time! Fallen leaves, adorn my night! Look alive! Ha! Ha! You asked for it! Wind Strider! Teamwork is dreamwork! Why do they never miss? That's gonna hurt.
The birds come! I must remain calm. I'm going in! You're dead meat! Buckle up! Hi! Wind Strider. Off we go! Wind Strider. Fallen leaves, adorn my night! Wind Strider. How much longer, Vichama? Not long. We're getting close. Quick! Take it! I found Kachina's ancient name. Hang in there, Malko. Just a little longer. Something's not right. The power of the Abyss is getting stronger. The Abyss is corroding his body. Vichama, you can't keep going. You'll die. I should have died 5 years ago. I just need a little more time. Please, I'm almost there. Thank you. Whoa, watch out! The power of the Abyss is strong. This power. Hanging in there? Malko. No! Why can't I find him? What? We can't wait any longer. Pull him away from the stone, Muala. I already tried. In that case, we have no choice. I'm sorry, Sea Molly. Get back! Chaska, wait! Ouch! What happened just now? It looked like— The stone's power was spiraling out of control. You were all caught in the shockwave of the— Give us a heads up next time, will you? You're lucky we managed to dodge. I thought I said to get— Yeah, barely a second before you made it go— Okay. At least Kachina— Vichama! Vichama? I couldn't once your ancient name disappeared, and now— Vichama. I'm sure he's heard— Huh? Huh? This is— Hey. Not enough to swing. I never thought. Guess I have some. Pisak. Always had to beat me at everything, didn't you? Right to the end, you were never one for goodbyes. Maybe you're right. Maybe no one will get to hear our last words. Vichama.
I'm so glad you didn't come with us. Don't be sad. Just keep on living. For the both of us. Was that a memory? Seems like we were able to salvage something after all. Of course. But A deeper pain? Why? Malco was always the type to put on a brave face. But in that memory just now, his hands were shaking. For all these years, I regretted not being able to— Vichama. I'm fine. Actually, I heard Chief Wyna wasn't really on board with your plan to go to the Night Kingdom. When you asked for my help, I hesitated too. I knew helping you find your friend's ancient name meant leading you one step closer to danger. But I also understood why you had to try. Everyone has regrets in life, but not everyone gets the chance to make up for them. Once allowed to fester, guilt strips us of our most valuable qualities as warriors. In that sense, we might as— If I could do it all over again, I would have followed Malco to the front lines no matter what. Even with an injured leg, there were still things I could have done. That way, even if the outcome stayed the same, I still would have fought alongside him to the end. There are critical junctures in life, and if you don't seize the chance to act, that's something I had to learn in hindsight. But you're still at the crossroads of your journey, so I hope you can walk away without regrets. Thank you, Vichama. I feel even more determined now. Kachina will come back to us. I'll make sure of it. I promised I would find her, and I intend to keep that promise. That's good to hear. Strange. My body, it's— Once abyssal corrosion enters the body, a portion will fuse itself to your internal organs. Even though the Traveler possesses powers of purification, the corrosion can never be fully eradicated. Thanks to him, though, you were only briefly exposed. Slowing your breathing and controlling your emotions should help you keep the symptoms in check. That does make me feel better. You seem very knowledgeable about all this. Just speaking from experience, that's all. Anyway, we've recovered and Koichi, are you really gonna just stand there like that? I don't know what you want from me. I think you know exactly what I'm trying to say, Uncle Wyna. I can hear it in your voice. Honestly, it's just— They're back. Koichi? What are you doing here? Don't play dumb with your own sister. You know exactly why I'm here. My apologies, everyone. I just need to borrow Tosca for a few minutes. You come with me. I'll be just a moment. Who is that? Koichi, Chaska's younger sister. Although the two aren't actually related by blood, it's kind of a long story. It's not really my story to tell, but I guess it's not a secret. You see, Chaska was actually raised by cuckoo sores. She was afflicted with a rare disease when she was a child, and abandoned in the wild as a result. The Abyss found her out there, all on her own, and tried to devour her. But in the end, all that did, that strength of will— Well, when Chaska finally returned to human society, it was Koichi's parents who adopted her. At the time, Chaska still had a habit of getting into fights, so Koichi was always taking her around,
apologizing to everyone. Ah, I remember those days. One of those fights was definitely with me. But, you know, kids. You're fighting one minute and your friend's the next. Eventually, she found a way to rein in that desire to fight. And now she's who people call to resolve conflicts. She's known as the Peacemaker. It sounds like she still argues with Koichi, though. Don't siblings usually stop fighting when they get older? That's partly my fault. Koichi asked me to stop Chaska from doing anything dangerous, but you probably know by now, once Chaska makes up her mind, there's no changing it. Oh, I get it. No wonder you tried to talk us out of going to the Night Kingdom. Chaska even said that wasn't like you. I'm all for your adventure. You need to take risks when you're young, because by the time you're my age, you couldn't attempt something like that even if you wanted to. Better try now than live with regrets later. That's what I say. Still, I can understand where Koichi's coming from. In the end, nobody wants to sit back and let a loved one put their life on the line. All right, it's just the two of us now. You have 1 minute to explain yourself. I don't have anything to say. You don't have to approve, but you should know I only do what's necessary. That attitude is exactly the problem. It's like you don't care. You try to sneak off to the Night Kingdom behind... Well, technically I am going abroad, right? Again with the excuses! We agreed, didn't we? There are 4 levels of danger. If it's not something urgent, you can only engage in level 2 danger and below. You can only go up to level 3 if a situation is so dire, but a trip to the Night Kingdom... What do you mean, sneak? You bought off Uncle Wina, didn't you? He promised me he'd... You feel like he went back on his word. What if I told you my mind was made up, and there was nothing he could have done? Not even by force. Oh, I knew it! So he did try to say something, but you didn't listen. This is important. If you were in my shoes, you'd make the same decision. You don't know that? I'm a doctor, and I handle logistics. If you're going to waltz into a dangerous situation where you could lose control at any moment... All right, whatever. What do you mean, anything else? What? Time out. Is this... Chaska, does it sound like I'm joking? Then... you need to know something. But the person you... That's a different issue. You said it yourself. I've also told you that managing your condition is equally important. Sometimes you have to make sacrifices. All right, let's stop this here. If we keep going, I might actually have to get serious. Is that a threat? That sounds like a threat to me. Koichi! So, you're really going to go, no matter what I say? Then support me. I'll be back. All you have to do is wait. Chaska. So, that's it. Why'd you have to turn out to be so darn annoying? You two are something else. हेलो वेलकम टू माय स्ट्रीम। क्या हाल चाल है? हेलो स्वागत है आपका आज की लाइव स्ट्रीम पे। आवाज आ रही है क्या ब्रदर? You two sure are similar. ब्यूटी Really? ब्यूटी मुल्ला। You know, I said that very thing to Koichi not too long ago, and she reacted the exact same way, down to the very tone of voice. It's not my place to think it. Alright. If you're done with the spirit speaker stone, you might as well hand it over. हम गरीब आदमी। According to Kinich, it's an important ceremonial artifact, so it'd be safer to keep it with me. If only Tone Deaf Bard... It might be in a few more pieces than you remember. Huh? I see. Sounds like it was an urgent situation. Still, Citlali's going to be a nightmare to deal with now that you've broken her stuff. I'll explain everything to her later. Stay safe out there in the Night Kingdom, okay?
Time to go. Watch out! Follow the wind.
हेलो पकड़ लिया Everyone can hear your voice. Haven't you heard? There's a strange water. We mercs have one simple rule. Whoever pays the most is your new boss.
Adventure time! Everybody stand back! Gloves off! Buckle up! Ha! Huh! थोड़ी देर से लाइव स्ट्रीम बंद कर देंगे हम लोग। Let's light it up! Look alive! Watch out! Hey there! A proper send-off! From the Stina with love. Teamwork is dreamwork! Watch out! Benny's... Adventure time! You asked for it! Ha! Let's light it up! I'm going in! This one's got your name on it! Let's get it on! There is no escape! Teamwork to oblivion! Off we go!
Benny's adventure team, assemble! Or not. Adventure time! Let's light it up! This one's got Look alive! name on it! You're dead meat! Feeling lucky? Hey there! I'm going in! Let's light it up! Umbrella warfare, I guess. Buckle up! Let's light it up! Hey there! Shine down! Let's get it on! Oh, ow! Where did that come from? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वाचिंग, लव यू ऑल दोस्तों, Let's go बाय find some बाय, treasure. मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में। Benny's adventure team, assemble! Or not. Huh? Let's light it up!